me quickly check. I believe students are still joining in. Okay. Okay. So till the time others still join in, okay. Tajur and Rajeshri, you both were present for the earlier lectures, right? Yes, ma'am. Okay. So for a quick recap for first, let me just share my screen. Okay. For a just recap, can we just help Bunty and tell her what all we studied so far? Okay, ma'am. Yeah. Can anyone tell her about set on and set off? Yes. What is set on and set off? Yes, if a company has received a lot of bonus, so the company can reserve it for next up to 4 years and can give the bonus from the reserved if there is not enough surplus available. Very good. If a company has a lot of bonus, a lot of profit which it has made. A lot of profit made. Okay. So if a company has made a lot of profit, then definitely after giving away the 20% or after securing 20%, after that also if there is any allocation surplus which is remaining, then in that case scenario, definitely the company has a right that it can carry forward that particular amount for subsequent next 4 years. Right? Yes, very nicely answered. So now can anyone say what is set off then? Can anyone explain it to Bunty? We know now what set on is. What is set off then? If employer use a reserve surplus for giving employee to minimum bonus, then it's set off. Okay. And anyone else who would like to try? Anyone else who would like to try? So what is set off? Students? Ma'am, if a surplus, allocable surplus is not available, then for that year, then it is carry forward Very good. to the next year. Very good. So set off is a situation wherein you really don't have funds, you don't have profit, you've not generated so much profit out of which you have to give a bonus to the employees, right? So in this case scenario, what are you going to do? It is going to be more like a liability. It's like a loss for the company, right? Because it has not generated a lot of profit. Because if it's not generated a lot of profit, it does not have that much of surplus left to actually allocate. So it has to give, right? It has to give, but it definitely has to give minimum bonus. So that is more like a loss for the company. So what is it going to do? It is going to carry forward that particular loss in the next year. So while calculating the profit, it is going to calculate considering the set off amount. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So when you're talking about set on and set off is very much important when you actually have to calculate the profit. Okay. So where in any accounting year, any amount has been carried forwarded and set on and set off under this section, then in calculating the bonus for the succeeding accounting year, the amount of set on and set off carried forward from the earliest accounting year shall first be taken into consideration. So to pay the bonus for the next year, obviously the
off has to be considered to actually know how much is the surplus which is remaining. Is this clear? Yes, ma'am. And the allocable surplus so computed is distributed among the employees in proportion to the salary or wages received by them during the relevant accounting year. So set off and set off is very much important to actually calculate the bonus for the next accounting year as well. Is this clear? Yes, ma'am. Good. So, and then after that, we have studied about special provisions relating to newly established organizations. Can anyone quickly tell me what did we study under this section? Bunty was not there in class. Can anyone help her with this section? What does this section talk about? Yes, ma'am. मैम जैसे नॉर्मल कंपनीज जो अभी न्यूली स्टेब्लिश होती तो उनके लिए प्रॉफिट देना या प्रॉफिट अर्न करना इतना इजी नहीं होता है, तो बोनस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, तो सेट ऑन और सेट ऑफ वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो इस केस में फर्स्ट 5 इयर्स में उन्हें एक टाइप की मतलब छूट दी जाती है कि आप अभी बोनस मत दो क्योंकि आपके पास उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, बट आफ्टर दैट इफ यू गेट एनी प्रॉफिट तो आपको वहां से बोनस एलोकेट करना पड़ेगा, फिर देन सेट ऑन और सेट ऑफ वाली कंडीशन भी यहाँ पे लागू हो जाती है। Very good. So this was in regard to 5th year, 6th year and 7th year. Very well, very nicely explained. What is your name? मैम जागृत। Jagrat. Very nicely explained. So very nicely pointed out by Jagrat कि when you're talking about new establishment को actually run करना और profit बनाना, it takes certain time frame period. ऐसे नहीं है कि 1 महीने में अगर ये establish हुआ और newly established है और अभी profit बना देगा, नहीं, it takes some certain time frame period, right? So the act has acknowledged this fact कि yes, definitely अगर newly established organization है, it is going to take some time because production शुरू होगा, sales फिर होंगे, उसके बाद कुछ profit आएगा, so it takes some time frame period. So कितना time frame period दिया है? 5 years तक, कि 5 years तक you try establishing, okay, और उसमें अगर कोई भी साल में प्रॉफिट अगर हो रहा है तो फिर यू आर लायबल टू गिव द एम्प्लॉय द बोनस। पर अगर आपने फर्स्ट 5 इयर्स में कुछ प्रॉफिट ही अर्न नहीं किए हैं, देन इन दैट केस सिनेरियो यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल टू एम्प्लॉयर्स विल नॉट बी कंपेयर्ड टू गिव बोनस टू द एम्प्लॉयज। अब सिचुएशन है, हमें फर्स्ट 5 इयर्स के बारे में पता चल गया। जब नई कंपनी शुरू होती है तब से फर्स्ट 5 इयर्स का सिचुएशन हमें पता चल गया कि अगर एम्प्लॉयज अगर नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, then that case scenario employers will not be liable to pay bonus to the employee. Now, तो 6th और 7th ईयर में क्या होगा? फर्स्ट 5 इयर्स में डेफिनेटली सेट ऑन और सेट ऑफ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। 6th and 7th में क्या होगा? द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6th ईयर का सेट ऑन एंड सेट ऑफ बता रहे हैं तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट 5th ईयर में अगर कमाया, इफ एट ऑल कुछ कमाया है, देन ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड 6th ईयर में हो जाएगा, राइट? So when you are considering the 6th year के profits, obviously आप set on और set off किसका देखेंगे? 5th as well as 6th, right? And अगर आप obviously 6th year से profit दे देना पड़ेगा कंपनी को। अगर profit बना रहा है तो obviously company is definitely going to be liable to pay profit to the employees. So and that particular profit is going to be paid from where? It is going to be paid from allocable surplus which is available. Okay, and from that, from 6th and 7th year student, the set off and set on principles are going to be applicable. So when you are talking about the 6th year, the set on and set off कौन से accounting year का होगा? 6th में 5th और 6th, very good. और yes, और अगर आप जब 7th year का कैलकुलेट कर रहे हो, that time set on and set off कौन से पीरियड फ्रेम का देखा जाएगा? 5th, 6th and 7th. Very good. 5th, 6th and 7th. Very well. Then we understood about adjustment of customary or interim bonus. Now can anyone quickly explain Bunty about what is adjustment of customary bonus? कि या customary bonus क्या होती है? और ये interim bonus क्या होती है? What is it?
Can anyone explain? Any bonus given? Yeah, Ma'am, any bonus which is received by given by the employer in festivals, it is known as the customary or interim bonus. Very good. So customary bonus ऐसी bonus है जो सालों साल से दी जा रही है. For example, गणपति bonus, दशहरा bonus, दिवाली bonus, ये this is nothing but customary bonus, right? Interim bonus का मतलब क्या होता है? Interim, बीच में bonus देना, right? So now question here arises is that when an employer, okay, is giving such kind of customary bonus or interim bonus, right? So will that also be included for considering the bonus of 20% or that would be excluded? This is the most important question. So what did we understand? What did we learn? What did we understand? What did we learn, students, in regard to adjustment of customary or interim bonus? Ma'am, the maximum bonus amount will not be above than 20%. That's the maximum limit. If employee अपने बिहाफ पे अपने इच्छा से कुछ देना चाहता है तो दे सकता है, बट एम्प्लॉय डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे ये इस टाइप का बोनस चाहिए या फिर और इस टाइप एक्स्ट्रा, तो नहीं, 20% मैक्स है. Okay, very good, very nicely answered. So already अगर employer ने employee को customary bonus दिया है 10% का, okay, then will the employer be liable to pay more 20% or will he be liable only to up to the extent of 10% more? 20% only. Correct, very good. So this is to say that when you are talking about overall, it means overall 20%, ना? maximum limit कितना है bonus का? 20%. तो अगर वेरी गुड, तो एम्प्लॉयर ने अगर बीच में कुछ बोनस दिया है या तो बीच में कोई कस्टमरी बोनस दे दिया कि दिवाली बोनस, दशहरा बोनस, ऐसे कुछ दे दिया है, राइट? तो क्या ये सारे अमाउंट जो बीच में दिए हैं या कस्टमरी बोनस या दशहरा या दिवाली के जो दिए हैं, क्या वो सारा काउंट होगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कितना दिया है, कि ये सब फैक्टर्स काउंट नहीं होंगे, ये सब बोनसेस काउंट नहीं होंगे? दिस इज द क्वेश्चन. काउंट होने चाहिए मैम, काउंट होंगे. वेरी गुड, तो ये काउंट होंगे. सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग customary bonus is a part and parcel of the main bonus. It is one of the type of bonus, but this customary bonus is not defined anywhere in this particular act. But customary bonus is a type of bonus which is paid to the employers by the employees, which is going on since years down together. That is customary bonus. Interim bonus मतलब बीच में जो पे कर रहे हैं. एम्प्लॉयर क्या बोल रहे हैं, एक्ट क्या बोल रही है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कस्टमरी बोनस या इंटरिम बोनस दिया है, देन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो मैक्सिमम अमाउंट कितना बोनस देना है, दैट इज 20%. तो अगर आपने बाय वे ऑफ कस्टमरी और इंटरिम ऑलरेडी 10% इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपने दे दिया है, देन बैलेंस इज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10%. सो एम्प्लॉय यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कस्टमरी बोनस तो अलग है, नहीं, कस्टमरी बोनस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेन बोनस. सो अगर आपको एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी एम्प्लॉय को 10% दे दिया है, देन रिमेनिंग मैक्सिमम अमाउंट व्हिच वी नो इज 20. सो आफ्टर 20 ओनली 10% इज नाउ 10% which is left, which employer has the right to give it to the employee. इससे ज्यादा एम्प्लॉय के नॉट से नहीं कस्टमरी बोनस तो अलग है, वो अलग आपने दिया था, ये जो बोनस है वो अलग है, नहीं, ये सब एक ही चीज है, एक ही एम्बिट के अंदर आते हैं. सो दैट इज 20% से ज्यादा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द बोनस, वो 20% से ज्यादा एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे टू एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉय के नॉट डिमांड के नहीं ये तो अलग है, ये अलग नहीं, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं. एट द एंड इट इज अ बोनस. ओके, सो व्हेन यू एम्प्लॉय अगर ऐसे बोलता है कि नो वी नीड मोर मनी, वो तो कस्टमरी बोनस था, पर वो बोनस तो है, राइट? सो देयरफॉर एम्प्लॉयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पे additional bonus. Is this clear? समझ में आ गया students? Is it clear? Yes. Okay.
Okay. Okay. Then we had just studied about deductions of certain amount from the bonus payable. Can anyone explain this concept to Bunty? Yes, ma'am. What is it? मैम लाइक किसी एम्प्लॉय ने कोई फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साइड से किसी मीटिंग में गया, यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को किसी और कंपनी के सामने शो करने का, और वहां पे उसके किसी मिसकंडक्ट के कारण या फिर अदर सिचुएशन के कारण कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है उस एम्प्लॉय के कारण, तो उस कंडीशन में कंपनी उसको बोनस पे नहीं करेगी. मतलब ऐसा कर सकती हो. पे नहीं करेगी कि उसके अमाउंट से डिडक्ट करेगी? हाँ मैम, उसके अमाउंट से डिडक्ट कर लेगी. Very good. So this is again a very important section which talks about deductions of certain amount from the bonus payable. So here क्या बता रहा है कि अगर employer को employee की वजह से कोई financial loss होता है, then in that case scenario employer जो liable है bonus pay करने के लिए employee को, उसमें से वो deductions कर सकता है. Why? Because of the reason of employee के एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस आया है बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट, बिकॉज ऑफ हिज फ्रॉडुलेंट एक्ट. तो देयरफॉर द एक्ट एम्पावर्स, गिव्स अ राइट टू द एम्प्लॉयर कि ही हैज अ राइट, ही कैन डिडक्ट सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द बोनस व्हिच इज पेएबल टू द एम्प्लॉय. इज दिस क्लियर? यस मैम. पर प्रीरेक्विजिट्स क्या है ये राइट को यूज करने के लिए? व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स? राइट फर्स्ट पॉइंट, ये एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इनको फॉलो करना है. कि आप अगर नहीं करोगे तो ये आपका जो आपके बोनस से ये अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट इज कि अगर ऐसा कोई उस पे ब्लेम लगाता है कोई कि एम्प्लॉय ने ऐसा किया है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि आप अपना पॉइंट सामने रखो कि आपने किया है, नहीं किया है, क्या कंडीशन थी. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड थर्ड पॉइंट इसकी इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, डोमेस्टिक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई एक अदर थर्ड अथॉरिटी चेक करे कि क्या ये सही है, क्या गलत है, कोई इसको मतलब गलत तरीके से कुछ इन पे ब्लेम तो नहीं कर रहा है. देन फिर इसका जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा. Very good, very nicely answered. So यहाँ पे first and foremost to apply this particular section, it is very much important कि employer और employee के बीच में एक contract बना है, wherein employer is as a terms and conditions in the contract there is a term and condition which states that कि कल सुबह अगर employee के misconduct की वजह से अगर कोई financial loss हो रही है employer को, then he will have a right to deduct that particular certain amount from the bonus of the employee. Okay. Second of all, जब ये अगर ये right employer के पास है, then subsequently employee के पास भी right है कि he should be given an opportunity of being heard. कि वो definitely वो तो यही बोलेगा कि ये deductions मेरे bonus से नहीं होने चाहिए. So he should be given an opportunity to say that ये deductions क्यों नहीं होने चाहिए. Very good. वेरी नाइसली आंसर्ड. देन उसके बाद क्या है कि ये इसकी इंक्वायरी, डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी. ओके. तो जो ऑफिसर है वो देखेगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, और उसके बाद में अगर उसको ऐसे लगता है कि यस दीज आर जस्टिफाइड डिडक्शंस, देन द डिडक्शंस शैल बी मेड. पर एम्प्लॉयर विल हैव टू मेक ये जो डिडक्शंस है, ओके, इट हैज टू बी वेरी मच लेजिटिमेट. ओके. वेरी गुड, वेरी नाइसली आंसर्ड. Is it clear to you, Bunty? Bunty, is it clear? Yes ma'am. Okay, then we had seen about the time limit for the payment of bonus. Can anyone tell me what did we study under this? Time limit for the payment of bonus. क्या पढ़ा था हमने? मैम कि जो बोनस है उसको within 8 months पे करना है from the close of accounting year. नॉर्मल केस में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको within a month from the date of award करना है.
और अगर गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एक्सटेंड भी कर सकता है 8 मंथ को 2 years तक, अगर उसके पास कोई एम्प्लॉयर के पास जेन्युइन रीजन है वो नहीं पे कर सकता है तब। वेरी गुड, वेरी नाइसली आंसर्ड। तो यहाँ पे टाइम लिमिट बताया गया है कि within what time frame the payment of bonus must be made by the employer to employee. So in the general rule है, normal rule है, वो क्या बताता है कि within 8 years from the close of accounting year हमें पता है 31st March को बंद is the end of the accounting year, right? So वो 31st March से लेकर जो 8 months आता है, within that frame period the bonus must be paid by the employer to employee. But कल सुबह हमने ये भी situation देखी कि कल सुबह अगर dispute हो रहा है employer और employee के बीच में, right? तो in that case scenario कैसे what would be the time frame period? So we know that when an award is passed, then within 1 month from the date of award the bonus must be paid. Right? But क्या state government has a power to extend 8 months to 2 years? If an application is made by the employer and the employer justifies that it is not possible for him to pay bonus within the period of 8 months, then can does the appropriate have a power to extend it till 2 years? Does he have a right to extend 8 months up to the period of 2 years? Yes, ma'am. Yes, very good. Yes, ma'am. So, very good. We had studied about time limit, then we have studied about recovery of bonus due from employer. Now, can anyone put a light on this section? What does this mean? Recovery of bonus due from employer? Can anyone put a light on this particular provision for Bunty? Yes, students, quickly. Recovery of bonus due from employer. What does it mean? Anybody? What? Recovery of bonus due from employer. उसका मतलब क्या है? मैम, एम्प्लॉय को जो बोनस मिलना चाहिए वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं करता। करेक्ट। तो अगर इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय को ये बोनस मिलना चाहिए और एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया, तो इन सच के सिनेरियो एम्प्लॉय के पास क्या है, राइट है? He can make Then वो appropriate government application file कर सकता है। One by one, please. Ma'am, he can make the application to the appropriate government for the recovery. वेरी गुड। पर मुझे ये बताओ कि कल सुबह एक एम्प्लॉय था, वो काम कर रहा था एक एस्टैब्लिशमेंट में, पर उनके देहांत हो जाती है, ही एक्सपायर्स, देन इन दैट केस सिनेरियो, और उसको बोनस मिलने का था एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसको ही वाज लायबल टू रिसीव बोनस, बट द एम्प्लॉयर डिड नॉट गिव हिम द बोनस एंड ही एक्सपायर्स, then within 1 year's time frame period, can his legal representatives or assignees have a right to make an application for the recovery of bonus? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I say it can be either employee or his legal representative who will have a right to move an application for the recovery of bonus? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो application है, can it be oral or it has to be in writing only? Ma'am, it has to be in writing only. Very good. It has to be in writing. और ये application जो है employer या तो इस legal representative, ये application किसको to whom will they apply this application to? To whom will they give this application? To appropriate government. Very good. फिर ये appropriate government क्या करेगी? मैम, कलेक्टर को इशू करेंगी। पर उसके पहले कुछ करेगी appropriate government? मैम, Certificate. करेक्ट। तो उसके appropriate government को जब ये application आएगा, then he will see कि what is it? Is the employer still liable? Is the employee actually liable to get the recovery of bonus due? ओके, अगर उसको लगता है हाँ ये अमाउंट सही है, ये अमाउंट ऑलरेडी कोर्ट ने मेंशन किया है, ये इतने अमाउंट देनी चाहिए और एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, देन ही इज गोइंग टू प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट व्हिच ही इज गोइंग टू गिव इट टू हूम? टू कलेक्टर।
ओके, बट एक्चुअली कलेक्टर को बाद में जाता है, उसके पहले किसको जाता है? उसके पहले किसको जाता है स्टूडेंट्स? टू एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर नहीं, कंट्रोलर। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू गो टू कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर क्या करेगा? ही इज गोइंग टू हैंड इट ओवर टू कलेक्टर, और कलेक्टर का ड्यूटी क्या हो जाएगा? कलेक्टर will do everything in his power to make sure कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को whatever बोनस ड्यू है वो दे दे, right? So what all powers does a collector have? Can anyone tell me? What all powers does collector have? Now recover the amount. Very good. Now how can he recover the amount? What all powers does he have? Being a collector. The name itself suggests collector means the one who collects money, right? So now ये जो collector है, if he has to recover that particular amount of bonus, right? What powers do you think he has? What can he do in his capacity to recover the amount of bonus from the employer? Ma'am, he have all powers like he Can he auction the property of the employer? Yes, ma'am. Can he steal the safe of the company? Yes, ma'am. Can he take the custody of goods which is lying in the property of the employer in the company? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So he has all these powers, okay? And why is he using these powers? To make sure that employee को जो amount due है, वो employer pay कर दे employee को. Is this clear? So this is what you mean by recovery of bonus due from employer. Is this clear to you, Bunty? Is it clear, Bunty? Apart from Bunty, is there any other student who were not present in the earlier two classes, in the earlier two sessions that we had? Bunty के अलावा और कोई student है जो नहीं present था in our first two classes, first two sessions? Diksha, you were not there. Okay. But did you understand whatever we revised so far? Yes, ma'am. Okay, great. Okay. Now, then we studied about reference of dispute under this act. Can anyone tell Diksha and Bunty what do you mean by this section? Reference of dispute under the act. जब dispute होता है employer और employee के बीच में in regard to bonus, right? Then in that case scenario, students, ये dispute क्या कहलाई जाएगी? Ma'am, industrial dispute. Very good. And this particular industrial dispute is going to be governed under which act? Industrial Dispute Act 1947. Very good. So अगर employer और employee के बीच में अगर bonus के लिए कोई भी झगड़ा झगड़ी होता है, then in that case scenario it is going to be considered as an industrial dispute, and the provisions of Industrial Dispute Act will be applicable for that particular dispute. Very well. Then we have studied about reference of dispute under this act. Okay, this we have studied already. Yeah. Now students, now tell me one thing, that when we are talking about presumptions about accuracy of balance sheet and profit and loss account of corporation and company, what did we study so far? Can anyone tell me what did we study under section 23? Yes, students, can anyone tell me अपने language में हमने क्या like what did we understand under this section before the break? What do you mean by presumption about accuracy of balance sheet and profit and loss account of corporations and company? मैम जो भी establishment के balance sheet होगी या profit and loss account होगा, जो वो provide करेंगे मतलब सर्टिफिकेशन के लिए कि ये सही है या गलत है, तो मैम प्रिज्यूम करके चला जाता है कि ये जो भी डेटा में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि एक इन्हें ऑडिटर या फिर सीए के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। तो वेरी गुड।
तो प्रिज्यूम करके चलते हैं कि इनका जो डेटा बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं। Very good, very nicely answered. So यहाँ पे क्या होता है ना, when obviously we know when the corporations and company they have to make their they have to maintain their financial records. They have to maintain this profit and loss account and balance sheet. Now who maintains their profit and loss account and balance sheet? Because it's a corporation and company. Who will prepare? Who will prepare? Very good. It is going to be the certified officers. It's going to be the certified auditors, certified chartered accountants. Okay. So now, students, when they are preparing the profit and loss account and balance sheet, there is going to be a presumption that whatever they have prepared, it is accurate. Okay, because they are the expert in the field of making financial records. So whatever they have prepared, okay, there is a presumption that it is completely accurate. Why? Because obviously the employer, इसको क्या होगा कि employers know that obviously if sales are more, the employers will have to pay more. They can have a maximum limit of 20%. They can pay up to extent of 20%, right? So employees को क्या होगा कि नहीं, ये balance sheet and profit and loss account अच्छे से नहीं बनाया है. But what is the law saying कि अगर एक कोई company और corporations है और उसके obviously company और corporations के हिसाब से obviously जो financial statements बनाने होते हैं, they have to be prepared by the certified officers, certified chartered accountant auditors. तो अगर ये लोग prepare कर रहे हैं, then it is a presumption that there is an accuracy in the financial records. Financial records are nothing but your balance sheet and profit and loss account of the company. Is this clear? Yes, Is ma'am. it clear? Okay. Further, this is one thing. Now, further than that, what does it say? That duly audited balance sheet by the Comptroller and Auditor General of India in respect of balance sheets of corporations and by the auditors for the companies will be accepted and will not be questioned. अगर ये prepare उन्होंने किया है, then no one has a right to question it, because they are the ultimate authority, right, to actually state whether this is true or not. So if they have prepared it, then they will not be questioned. Before any arbitrator or tribunal in case of a dispute, provided the authority is satisfied. अगर ये completely satisfied है, so whatever accounts has been stated, that is going to be considered as final. In the event the authority having doubts may proceed and may take steps to find out the accuracy of the required statements. In case in trade union employees raise objections in writing, the authority, if satisfied, may direct the employer to furnish such classifications as directed by the authority. Like I said, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ट्रेड यूनियंस को या एम्प्लॉइज को ऐसे लगे कि नहीं, ये गलत है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये ट्रू रिकॉर्ड्स नहीं है, तो दे हैव अ राइट टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. ओके, दे कैन डेफिनेटली आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, बट दे कैन नॉट क्वेश्चन कि ये गलत है. उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन कैन बी गिवन टू देम. इज दिस क्लियर? Yes, Is ma'am. it clear? So now I will read. It says, where during the course of proceedings before any arbitrator or tribunal under the Industrial Dispute Act or under any corresponding law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in a state to which any dispute of the nature specified in section 22 has been referred, मतलब जहाँ पे बोनस ड्यू का इशू है या तो बोनस पेमेंट का है, the balance sheet and the profit and loss account of an employer being a corporation or a company duly audited by the Comptroller and Auditor General of India or by the auditors duly qualified to act as auditors of companies under section 1 of section 226 of Companies Act are produced before it, then the said authority may presume the statement
and the particulars contained in the balance sheet and profit and loss account to be accurate, and it shall not be necessary for the corporation or company to prove the accuracy of such statement and particulars by filing an affidavit or any other mode. Okay, तो यहाँ पे अगर उन्होंने दे दिया है the profit and loss account which is properly certified, okay, by the certified auditors or the chartered accountants, okay, then in that case scenario the companies will not be liable to give more affidavits saying the statements are true or correct. No. Why? Because it is already the certified officers who have already given the certification. Is this clear? So see, it says that it shall not be necessary for the corporation or corporate to prove the accuracy of such statement and particulars by filing an affidavit or by any other mode, provided that where the said authority is satisfied that the statements and particulars contained in the balance sheet or profit and loss account of the corporation or the company are not accurate, it may take steps as to think necessary to find out accuracy of such statements and particulars. अगर उनको ऐसे doubt होता है, they can ask for justification. Justification is permissible, but they cannot say कि ये गलत है. नहीं, उन्होंने जो किया है अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप उनके पास से clarifications मांग सकते हो. Is this clear? So as a general rule क्या है that there is a presumption that अगर कोई corporations और company के financial records है, right? Dispute जब होता है employer और employee के बीच में, obviously the first thing that employee is going to ask the employer is about the financial record, because profit generate होगा उसी में से ही bonus मिलेगा, right? और कितना bonus मिलेगा will always depend on the amount of profit, amount of allocable surplus which is available. So this how will you determine by seeing the financial record. So when the arbitrator या तो any court proceedings में अगर ये financial records मंगवाए गए हैं और ये financial records are certified by the certified officers, which can be certified auditor or chartered accountant, then in that case scenario, that particular documents are going to be considered as accurate. And in that, and so much to say that कि company को फिर वो मोटा affidavit नहीं देना पड़ेगा, this is true and correct, नहीं देना पड़ेगा. Why? Because you already certified हुआ है by the certified chartered accountants and ये हमारे cost account, this chartered accountants and auditors. Is this clear? But अगर employees को कोई clarification चाहिए, अगर they are not satisfied, तो अगर उनको clarifications चाहिए, then definitely they have a right to ask for clarifications from these chartered accountants and cost accountants. Is this clear? सब कुछ समझ में आ गया? Simple है? Easy? Yes, ma'am. Easy, Okay. Can anyone explain this particular section in his own words? What is section 23 talking about? अपने for example अगर आपको short note आया, so how will you explain this? क्या है ये section 23? What does it talk about? What do you mean by presumption about accuracy? What are these balance sheet and profit and loss account? Especially in regard to corporations and companies. Yes, anyone who would like to try? Yes, ma'am. मैम हर कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट को अपना एक अपने मतलब ईयर वाइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे उन्हें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब शो करने पड़ते हैं. बट इन्हें मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि डेटा मतलब ईयरली वाइज देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है. तो लाइक ऑडिटर और सीएस वो सर्टिफाई करते हैं कि जो इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर वो चेक करते हैं सही है देन वो सर्टिफाई करते हैं. तो जब ये सर्टिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट को फिर से वहां पे कोई अपनी एक्यूरेसी प्रूव नहीं करनी पड़ेगी कि हमने ये जो स्टेटमेंट है जो डेटा यहाँ पे लिखा गया वो गलत है सही है कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा सर्टिफाई किया जा चुका है. तो ये वहाँ गवर्नमेंट द्वारा प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ जो भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक्यूरेट है और हम इस पे
अपना कुछ भी जो इन फ्यूचर जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. Very good, very nicely answered. Jagrat, right? Yes, ma'am. Very good, very nicely answered. Is it clear to one and all? Yes, ma'am. Very good. Now let us go ahead with the next provision, which talks about audited accounts of banking companies not to be questioned. Now, अभी हमने पता है कि कंपनीज और कॉर्पोरेशंस में क्या होता है, वहाँ पे सर्टिफाइड अकाउंटेंसी जो होते हैं, जो हमेशा लाइक दे आर द सर्टिफाइड, द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइड accountants, right? Now, section 24 talks about audited accounts of banking companies not to be questioned. Now, what is this section? Can anyone think? Can anyone guess? Can anyone tell me? क्या कोई सोच सकता है क्या होगा सेक्शन में? Anyone? Ma'am, the statements provided in any banking companies, I think, are not to be questioned by any trade union also. Yes. For example, audited accounts of banking companies, जो banking companies होती है, right? उनके भी audits होते हैं, उनके भी audited accounts होते हैं. Now, can you question them? That is the question. Can you say that no, they have done a fault, that is not right, उन्होंने fraud commit किया है? Can you question the audited accounts of banking companies जो audited है, they have already been audited by the certified auditors? Can you question them? No, ma'am. Ma'am, because क्यों आप already question करते हैं? मैम जो like in सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल, मैम वो हायर अथॉरिटी, तो आप उसके ऊपर मतलब डायरेक्टली उंगली उठा सकते हो इनडायरेक्टली, बट अगर आप उसी के जो मतलब जो चेयर पे ही आप क्वेश्चन करने लग जाए तो फिर उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा ऐसे में. वेरी गुड, सो वेरी नाइसली, या वेरी नाइसली आंसर. तो यहाँ पे क्या होता है ना, सो व्हेन वी आर सेक्शन 22 में आपने देखा है, इट इज टॉकिंग अबाउट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू द bonus, then we know that industrial dispute act will prevail. So यहाँ पे यही question है कि अगर if there is a dispute, okay, and if it is in relation to the audited accounts of banking companies, then can those be questioned? For example, आपको जो बैंक स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से they are calculating everything. Can you question saying that ये स्टेटमेंट गलत है? क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो ये गलत है? Because however you are doing the accounting, वैसे ही आपका जो लेजर है वो प्रिपेयर होता है, right? Yes, ma'am. तो can you question that? No, ma'am. No. So ये एक्ट वही बताता है कि audited accounts of banking companies also cannot be questioned. What does it say? Where any dispute of nature which is specified under section 22. Section 22 talks about कि अगर employer and employee के बीच में अगर कोई झगड़ा है in relation to bonus, तो in that case scenario, an employer being a banking company, जो employer है वो banking company है, and its employee has been referred the said authority under the section, and during the course of proceedings the account of the banking company duly audited are produced before it. कोर्ट के सामने audited banking the financial records है, कोर्ट के सामने अगर audited accounts पेश किए गए हैं, the question is, can you question it saying that it is not right? Audited accounts of banking companies? No, ma'am. No. So ये सेक्शन यही बता रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा है, एम्प्लॉयर हु इज अ बैंकिंग कंपनी एंड एम्प्लॉई, अगर जो डिस्प्यूट गया है कोर्ट के बीच में, और कोर्ट के बिफोर द कोर्ट इफ देयर इज एन ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी जो पेश किया, बिकॉज ऑब्वियसली
सब कुछ तो हमें ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही पता चलेगा ना एग्जैक्टली क्या है। तो अगर एम्प्लॉय ने मांग की है बैंक फाइनेंशियल अकाउंट्स की और एम्प्लॉयर ने अगर जो ऑडिटेड है वो अकाउंट्स पेश किया कोर्ट को, then in that case scenario it is going to be assumed that the audited accounts are true and correct. Those accounts cannot be questioned. Okay, so it says that where any dispute of the nature specified in section 22 between an employer being a banking company and its employee has been referred to the said authority under the section, and during the course of proceedings the accounts of the banking company duly audited are produced before it, the said authority means the said court. Okay, the said authority shall not permit any trade union or employees to question the correctness of such accounts, but the trade union or employees may be permitted to obtain from the banking company such information as it is necessary for verifying the bonus due under this act. Is this clear to one and all? Yes, Is this ma'am. clear? Simple Yes, words ma'am. में वेरी गुड। सिंपल वर्ड्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। नाउ किस बात के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, बोनस के ऊपर में डिस्प्यूट हो रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। कौन सा एक्ट गवर्न होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट गवर्न होगा। तो अगर वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर क्या बताएगा कि हमें लायबल नहीं है कुछ बोनस देने के लिए। एम्प्लॉय क्या बताएगा कि एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे मी बोनस। नाउ हम इस केस में एम्प्लॉयर कौन है, एक बैंकिंग कंपनी है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड बोनस देना है, कितना परसेंट देना है या नहीं देना, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिएंगे, Yes, ma'am. राइट। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मांग करेगा एम्प्लॉय, राइट। जब एम्प्लॉय फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मांग करेगा एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर ने अगर ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हैं बैंकिंग कंपनी के, तो यहाँ पे लॉ ये बताता है कि आफ्टर द एम्प्लॉयर ने पेश किया है ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, द एम्प्लॉई और द ट्रेड यूनियन कैन नॉट से दैट इट इज नॉट ट्रू एंड करेक्ट। Is this clear? ये ऑडिटेड है स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग द टर्म ऑडिटेड। ये ऑडिटेड सिर्फ नॉर्मल ऐसे पेपर में अकाउंट लिखकर नहीं है, ऑडिटेड है, राइट। इट इज प्रॉपर्ली साइंड एंड सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर्स, certified auditors, chartered accountants. So when it is properly audited, then in that case scenario, the employees or the trade unions ऐसे नहीं बोल सकते नहीं ये गलत है। अगर उनको लगता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, then they have a right to ask for clarification कि ये पर्टिकुलर का आप मुझे हिसाब बताओ, आपने कैसे कैलकुलेट किया, ये अलाउड है। But you cannot say कि no, this is not true at all. But if employee or the trade union have any doubt in the calculations made by the employer, that is by the audited accountants, then they can definitely ask for clarification. तो आप बताओ आपने कैसे किया कैलकुलेट, ये अलाउड है। Is this clear? But they cannot just question and say, okay, ये आपने जो किया है वो सब बेकार है, this is all wrong, this is not acceptable to us. नहीं, whatever, if it is audited, that means an expert has checked it and verified it and have put the signatures and made it certified. Is this audited? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Now, students, having understood section 24, now we are going to move to section 25. Just a minute. Yeah. Now, this is also a very interesting section. Now, what does this section talk about? Audit of accounts of employers not being a corporation or companies. Now, this is also, now अभी तक हमने क्या क्या बात की, पहले हमने ये बात की कि क्या प्रिजम्पशन होगा अगर एम्प्लॉयर जो है वो एक कंपनी है, एक कॉर्पोरेशन से, तो हमें पता चला कि प्रिजम्पशंस क्या होंगे। फिर हमने बात की
what if the employer is a banking company? तो हमें पता चला कि financial records हम लोग it's going to be considered as true and correct. Now students, observe properly. What is section 25 stating? Audit of accounts of employers not being a corporation or company. Right? What if that particular employer जो है, okay, the establishment जो है, it is not a company या वो corporation नहीं है, okay, एक undertaking है जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, right? और उनके बीच में झगड़ा हो गया है, right? Employer and employee के बीच में, और वो कोई company और corporations नहीं है. तो इन दैट केस सिनेरियो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनसे what is it going to be considered? Does the trade union have a right to question that financial records which are not certified, or how is it going to be? This we are going to understand. This is what is stated under section 25. Okay, but this section 25 is little lengthy. So what we are going to do, I think there are only 4 minutes left. So what we can do is I will give you break time, okay, and then we can meet after 15 minutes, okay, because this particular section is little long to understand, okay. So rather than doing it half, might as well I've given you an overview of what section 25 talks about. So what we will do once you're back, we are going to study in length. Okay, section 25 actually bata kya raha hai, because it's a very interesting section. Because we have understood कि अगर company हुआ, if a particular establishment is a company, then in that case scenario उनके जो financial records होते हैं certified. So what is the presumption under that? Then we are studied about an establishment which is a banking company. उनके financial records के बारे में हमने समझा कि अगर they are audited, then definitely they cannot be questioned. But now the situation is the third situation. What is the third situation? What if it is not a company or it is not a corporation? जो employer जो काम कर रहा है, जो undertaking है, what if it is not a company or it is not a corporation? So obviously जो mandate होता है about the provisions in regard to the auditors, right? तो वो तो नहीं होगा. So in that case scenario क्या होगा? Do the employees have a right to question? Do the trade unions have a right to question? All that provisions we are going to understand under section 25. Is it clear to one and all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So maybe you can enjoy your break. Okay. After you come from your break, we have few more provisions which we should discuss. We will also check with the amendments, and I think we will be able to finish with that today. Okay, ma'am. Okay. So I will give you your break time. Okay. So you all can enjoy your break, and I will see you back again in 15 minutes. So what time is it now? I believe it's 11 o'clock, right? Ma'am, 3:30. Sorry. I mean 3:30. 3:30. My watch. So it's 3:30. So we are going to again meet at 3:45. Okay, ma'am. Okay. Okay? Thank you, ma'am. Thank you so much, class. I will see you in 15 minutes. Okay, ma'am. Thank you.